Hello everyone, welcome again to Social Science class. Dear students, we have started a chapter in history, Nazism and the rise of Hitler. In previous lectures, we have gone through about the objectives behind the introduction of this chapter as a part of our syllabus. We have also gone through the topics that we are going to cover in this particular chapter. We have also gone through about the story of 11 years old German boy called Helmut, and we are discussing the story of that German boy Helmut. Remember, it's a real story. The story that has been created due to the conditions prevailing in Nazi Germany. If you remember, Nazi Germany means Germany under Nazi regime. When Hitler was the ruler of Germany, during that Germany, we use the word Nazi Germany. To refer that period of time, we are using the word Nazi Germany. Then we have also discussed about the meaning of Nazism. While discussing about the meaning of Nazism, we have seen that Nazism is synonyms of Hitler's worldview. We have also gone through the basic idea behind the Nazism or Nazi ideology. We have seen that Nazism believed that there is no equality among the human society. Rather, they believe that there is a racial hierarchy in which at the top, blonde, blue-eyed, German Aryans are there, Nordic German are blue-eyed, Nordic Germans are at the top, and at the bottom there is a Jews. And in between, Nordic German Aryans and Jews, all other races of human society lies means they all are categorized as a color. Hitler also emphasized that since German Aryans are superior in race, so they are having the authority to control the whole world and just eliminate all those who are placed at the bottom of this hierarchical concept, means Jews should be eliminated, Gypsies must be eliminated, they should not be given right to live. And he also took the ideas of two renowned scientists, Herbert Spencer and Charles Darwin. Hitler just altered their ideas only for giving a reason behind his thought. As Herbert Spencer has emphasized upon the theory of purity of blood, survival of fittest, and Darwin has also given the theory of natural selection and evolution. But it was lies into the animal kingdom, plant kingdom. But Hitler has used this theory for the human society, and accordingly he has stated that since Aryans are superior, so they have the authority to rule over the world. He also added the idea of Lebensraum or living space and stated that German Aryans, or you can say Nordic blue-eyed Aryans living in different parts of the world, they all are the part of Germany. So they should be a part of German nation. So Hitler was giving this concept that was appealing
to these Nordic German audience living in different parts of the world that they should be a part of one nation, that is German nation, and they should be an empire. Means it was going against the sovereignty of the territories where these people were living in different parts of the world. Means Hitler was claiming that he is the leader of Nordic German armies. This was his ideas. Actually, when we are talking about Nazism, as we have discussed in earlier lecture, we have also seen that Nazism is very much supporting or promoting, advocating the idea of aggressive nationalism. Aggressive nationalism emphasizes that the superiority of a particular nation and treating all other nations inferiorly. Hitler emphasized that Germany is superior. So Germany is having authority to rule all over Europe and the world. But one thing that I have emphasized while discussing about this Nazism, that ideas hadn't developed in vacuum. There must be some reason, there must be some logic, there must be some circumstances through which such ideas grew. Today we are going to discuss a new topic that is related to the Weimar Republic and also the condition of Germany during the First World War. Actually, the idea of Nazism, the rise of Hitler, is having its roots in this First World War actually. The great German society, the great German population were joined the hands of Hitler. They supported Hitler, they supported Nazism. The idea of aggressive nationalism, the idea that was based upon racial hierarchy, there was some reason. So, through this topic we are going to investigate under what circumstances the ideology Nazism developed, under what condition Hitler rise to power in Germany. So let's begin the discussion from where we have left the earlier discussion. Over there we have discussed about how this idea grew and developed from the First World War. So today we are going to discuss those topics in some detail. Let's see. Germany during the First World War. Remember, the period of First World War is 1914 to 1918. And if you remember, these world wars, two groups were participated, even in the First World War and in the Second World War too. In the First World War, there were two groups that was called, one is called, remember, one is called the, last class I have explained, one is called the Axis power and one is called the Allies power. In case of the Axis power, what are those countries? They are Austria, they are Ottoman Empire, means Turkey, and itself Germany. Germany actually was a very powerful country during the first half of the 20th century. Means first decade of the 20th century, first decade means 1910, 1920, Germany was very powerful country. Actually, Germany emerged one of the greatest power in Europe after the unification of Germany that took place under the leadership of Otto Bismarck. Since then, Germany just grew up in terms of power, in terms of prosperity and all. Germany participated in the First World War along with Austria and Ottoman Empire.
Turkey against the Allied power, namely England, France and USSR were the part of the Allied power, and this group was later joined by America too and USA too. Over there, one more power was there, it was Italy. Italy was also the part of the Allied power during the First World War. During the Second World War, Italy was the part of the Central Power fighting against the Allied power. So, you have to keep your eye on these terms. Germany defeated in the war, in the First World War, there is a German defeat. This defeat just brought a number of changes. Remember, during the First World War, and you can say in the first decade of the 20th century, Germany was under dictation. There was an emperor ruling over Germany. The defeat of Germany in the First World War had given an impression among the German people that it is the misleading of the German emperor due to which Germany got the defeat in the war. Defeat of Germany in the First World War had not been digested by the German population. As I stated to you, Germany unified through a number of wars under the leadership of Otto von Bismarck. As a chancellor, he was working over there. And after that, it was 1871 when Germany unified. And then after Germany emerged one of the major power in the Europe. So, getting defeat in the First World War was created a great dissatisfaction against the emperor. Emperor was leading Germany in the war. Under that circumstances, under that voice of resistance from the leadership of German emperor, ultimately emperor had to leave the Germany. Means now emperor was abdicated. Means abdicated means remove. Abdication means removal. Removal. So emperor was removed, and with that a new era in Germany had started. It was related to the establishment of first democratic government in Germany. Now, after the abdication, in a political front, a national assembly was formed. Representatives were elected. There was an election to the proportional representation, and after that particular election, one National Assembly was formed. It was at Weimar. Weimar refers to a place situated in Germany. Since the first meeting of the National Assembly held at Weimar, so this particular government had come to known as the Weimar Republic, and these representatives of Weimar Republic sat together and they formed a constitution for Germany that is called Weimar Constitution. That was a democratic constitution. This democratic constitution has suggested a federal structured government. Federal structure, a government having various levels, central authority and state authorities. Such kind of government, this Weimar Republic has suggested with the Weimar Constitution. So now there is a democratic government in Germany. This is happening with the defeat of the Germany in the First World War. Understand? Two events are held simultaneously. Germany got defeat in the First World War. At the same time, inside the Germany, people hostile against the German emperor,
that resulted in the formation of a democratic government called the Weimar government. This representative of National Assembly that met at Weimar formed a constitution that is also called the Weimar Constitution. Now, a new government came in power called the Weimar government or the Weimar Republic. Now, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ रहा है। देखिए, एक पॉलिटिकल रिजीम इंड हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है का पॉलिटिकल रिजीम का इंड होना, मैंने कहा कि यहाँ पे इंपरर को एब्डिक्ट किया गया, रिमूव किया गया और लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने मिलकर के एक असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली, और जर्मन नेशनल असेंबली को राइक्सटैग कहते हैं। तो राइक्सटैग यानी जर्मन नेशनल असेंबली पावर में आ गई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट करेगी। नाउ देखिए बैकग्राउंड क्या है इस वाइमर रिपब्लिक के लिए, बैकग्राउंड क्या है इस वाइमर रिपब्लिक को काम करना है इन दी background of First World War's defeat. First World War's defeat. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिफीट के बैकग्राउंड में वाइमर रिपब्लिक हैड स्टार्टेड रनिंग। अब याद रखिए डिफीट हुई है तो डेफिनेटली इस डिफीट का इंपैक्ट तो पड़ेगा और ये इंपैक्ट पड़ा और उसके बाद जर्मनी की पूरी व्यवस्था में एक गंभीर परिवर्तन देखने को मिली, लोगों की सोच में, लोगों के व्यवहार में, लोगों की नीड्स में, लोगों की एस्पिरेशंस में। तो एक्चुअली दिस न्यूली वाइमर रिपब्लिक had to face a number of challenges. Number of challenges. You can say the Weimar Republic had to face a number of difficulties. अब ये क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे या चैलेंजेस, डिफिकल्टीज कह रहे हैं या चैलेंजेस फेस बाय द वाइमर रिपब्लिक, इसलिए कहते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने रखी है, इसके ऊपर फिर से हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। लेट्स सी। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे? व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक? व्हाट were the problem faced by the Weimar Republic or what were the difficulties faced by the Weimar Republic? 3 marks questions have been asked very frequently in the examination. तो चलिए अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं वाइमर रिपब्लिक के लिए कैसी कंडीशंस थी और क्या वाइमर रिपब्लिक उसमें सफल हो पाया। क्योंकि देखिए जर्मनी की हार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जनता के मानस पटल को बिल्कुल बदल दिया था। एक परंपरागत जर्मन एम्पायर अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश हो रही है। अब जर्मन एम्पायर को हटा दिया गया है और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव अब गवर्नमेंट बना रहे हैं। एक नई कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ एक वाइमर गवर्नमेंट आ रही है, वाइमर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जैसे आपको पता है कि वाइमर रिपब्लिक मींस रिपब्लिक refers to a system of government where head of the state is elected for a certain time period। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट आ गए, चुनी हुई सरकार आ गई है, एक बड़ा परिवर्तन। तो हार से उपजी हुई निराशा को फेस करना है वाइमर रिपब्लिक को। हार के कारण पैदा हुई जो निराशा है जिसने लोगों के आत्मविश्वास को नीचे कर दिया है, the great German population, those who just took their unity remarkably during the German unification and they united after winning a number of wars, उसके लिए डिफीट पचाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ इस हार में जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था को, उसके सामाजिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। तो वाइमर रिपब्लिक हैड टू फेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको देखिए। From its beginning and throughout its 14 years, the Weimar Republic continued for next 14 years.
1980 में ये गवर्नमेंट आ रही है और ये अगले 14 सालों तक काम करेगी। आप मान के चल लीजिए 1932 तक। इस 14 सालों में Weimar Republic had faced a number of challenges और इस challenges को Weimar Republic पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हैंडल नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप Weimar Republic की फेलियर हुई है। तो यहां से इसी सवाल को बदल के ऐसा भी पूछा जाता है, what were the reasons behind the failure of the Weimar Republic? Means either ये difficulties के रूप में हो या फेलियर के रूप में पूछा जाए कि Weimar Republic की फेलियर के क्या कारण थे। उन सबों के साथ एक ही प्रकार के आंसर को बताना है। कैसे? तो देखिए, 14 years of existence, the Weimar Republic experienced numerous problems. A number of problems Weimar Republic had faced. What are those problems? First of all, many people blamed the Weimar Republic for the humiliating terms of Treaty of Versailles. ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। Blamed, many people blamed Weimar Republic को ब्लेम करते हैं for the humiliating terms of Treaty of Versailles. अब ये Treaty of Versailles है। Remember, in last lecture I have also emphasized upon the same. देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है तो अलाइज पावर के साथ जर्मनी की एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट, और इसी ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। Means there was a treaty, there was an agreement between the Allies power and the Germany in year 1919. ये treaty of Versailles 1919 में है। Through this particular agreement itself, the war between Germany and Allies power came to be ended. देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 18 लिखा है, यहाँ 19 लिखा है। 18 में युद्ध समाप्त हुआ, ऑफिशियली दोनों पक्षों ने इस चीज को माना कि युद्ध समाप्त हुआ, बट देयर वाज अ नेगोशिएशन, क्योंकि जीतने वाले अब हारने वालों पे अपना सिकंजा कसेंगे और इसके लिए पेरिस में कई बैठकें हुई इन सभी देशों के बीच, अलाइज पावर और जो हमने बात की है, जो ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच, इनके बीच एग्रीमेंट होगी, उसके लिए डिस्कशन चलेगी पेरिस में। और उसमें से एक संधि, एक एग्रीमेंट 1919 में जर्मनी और अलाइज पावर के बीच होती है, जिसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो यहाँ टर्म है ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल, मींस अपमानजनक। देखिए, जीतने वाले हारने वालों के ऊपर पूरा दबाव पैदा करते हैं। ये एक सबक है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। कभी भी किसी भी देश की, सभ्यता की, मानव समाज की इतनी बदनामी नहीं होनी चाहिए, इतना अपमान नहीं होना चाहिए कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन उस अपमान की आग में जलने लगे और उसका बदला लेने के लिए वो तत्पर हो जाए। यही जर्मनी के साथ हुआ और ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल वास्तव में ये रूट है किसके लिए? राइज ऑफ हिटलर के लिए। ये रूट है किसके लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे। बट रिमेंबर, इट वाज अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी दैट वाज इम्पोज्ड अपॉन द जर्मन। और याद कीजिएगा, देखिए, युद्ध में हार के लिए जवाबदेह बनी जर्मन के एम्परर। 1918 में जर्मनी की हार है और एम्परर तब समाप्त है। 19 में किसकी सरकार है? वो वाइमर रिपब्लिक की। The representatives of Weimar government were participated in the Paris Peace Conference। और उस कॉन्फ्रेंस में जो संधि हुई, जो समझौता हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस यानी पेरिस का शांति समझौता, उसमें जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट है, जर्मनी और इसके बीच अलाइज पावर के बीच, टर्की और अलाइज पावर के बीच एक एग्रीमेंट है और एक एग्रीमेंट ऑस्ट्रिया और अलाइज पावर के बीच है। तो जर्मनी और अलाइज पावर के बीच की ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, that was
represented in that particular Paris Peace Conference. Weimar representatives of Weimar Republic had participated. तो एक्चुअली उन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था और ये ह्यूमिलिएटिंग थी इन टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस, जर्मनी के लिए ह्यूमिलिएटिंग थी, अपमानजनक। क्या क्या बातें थी इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, बस परंतु मैं आपको संक्षेप में इतना बता दूं कि इसने, इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी को युद्ध शुरू करने का अपराधी बताया, वॉर गिल्ट, उसे लड़ाकू घोषित किया कि ये लड़ाकू देश है, ये झगड़ा करता है, साथ में उसे जिम्मेवार ठहराया गया कि युद्ध के लिए जर्मनी जिम्मेवार है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया को भी यही बात कही गई, टर्की को भी यही बात कही गई, लेकिन मैं जर्मनी को फोकस कर रहा हूं कि देखिए क्या परिवर्तन अब आया, और साथ में जर्मनी के ऊपर एक बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति की रकम थोप दी गई, मतलब वॉर कॉम्पनसेशन। Germany had to pay huge sum of money to the Allies power as Germany was held responsible for starting the First World War. तो एक समय उसे युद्ध का घोषित किया गया, युद्ध के लिए उकसाने वाला देश घोषित किया गया, उसके ऊपर बहुत बड़ी हर्जाने की रकम ला दी गई कि आपको देना है। साथ साथ एट द सेम टाइम Allies power had occupied a number of mines और इकोनॉमिक एरियाज ऑफ जर्मनी। जैसे जर्मनी लोहे और कोयले के मामले में एक लीडिंग प्रोड्यूसर था, तो अलाइज पावर ने उसके इन इलाकों पे कब्जा कर लिया। जर्मनी की कई टेरिटरीज को, जो उसके एम्पायर के अंदर बहुत सारे इलाके थे, उसको उसमें से छीन लिया। एक समय पैसा देने की भी बात करी गई और उसके इकोनॉमिक जो जोन थे उसके ऊपर भी आपने कब्जा कर लिया। मतलब आपने किसी बंदे को हाथ पैर बांध करके पानी में डाल दिया कि कहां तैरो। That was humiliating. This treaty of Versailles was very much humiliating for a great German nation. और यही एक कारण थी कि पूरी जर्मनी की जनता इस अपमान का बदला लेने के लिए लगातार तत्पर थी, और इसी अपमान की आग से हिटलर जैसा व्यक्ति सामने आता है जो लोगों को यह भरोसा दिलाता है कि मैं आपको इस अपमान से मुक्ति दिलाऊंगा। I will take the revenge of German insult। और यही वो थ्योरी थी, यही वो भावना थी जिसने हिटलर को बहुत जल्दी पॉपुलर बना दिया और हिटलर जर्मनी का सर्वोच्च नेता बन गया, फ्यूरर। तो एक यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर why this agreement was signed by the representatives of Weimar Republic? अगर इतनी इंसल्टिंग थी तो नहीं साइन करना चाहिए था। बच्चों इस पर चर्चा करेंगे, पर एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके कनपट्टी पर किसी ने बंदूकें टांग दी हो और कहा जाए कि साइन करो, कहा जाए कि ये बोलना है, आप क्या करोगे? There was the same situation. I will explain you in next topic. Second problem, what the Weimar Republic had faced, it was hyperinflation during the Weimar Republic। देखो युद्ध से जर्मनी की अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। जर्मनी ने अपने पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट? नाउ जर्मनी हैड इम्पोर्टेड ट्रेजरी और गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। कैसे इकोनॉमी को सर्वाइव कराएगी? क्योंकि जर्मनी तो बर्बाद हो चुकी है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो हाइपर इन्फ्लेशन होगी, यानी the purchasing power of the currency declined very sharply. At the same time, the cost of production increased very high, and there was a huge unemployment. Hyperinflation referring a situation where the purchasing power of the currency declined sharply. At the same time, unemployment increases very sharply. फिर से समझिए, कहने का आशय क्या है कि ये वो सिचुएशन है जब मनी की परचेजिंग पावर शार्पली डिक्लाइन करती है। अर्थात जैसे फ्यू इयर्स बैक
One samosa could be purchased at the rate of 2 rupees, 3 rupees. But at present, the same samosa can be made available at 7 rupees, 8 rupees. Samosa is the same. समोसा वही है, परंतु जो समोसा कुछ साल पहले 3 रुपए में मिल रही थी, आज वो 7 रुपए में मिल रही है। Means the purchasing power of 7 rupees at present is equal to the purchasing power of rupees 3 of few years back. 2 साल पहले जो 3 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, वही परचेजिंग पावर आज 7 रुपए की है। आप याद करो, अपने स्कूल फी 2 साल पहले दे रहे थे और आज आप दे रहे हो। You are getting almost same facilities, but you are paying more for the same. Means the purchasing power or the cost of the services from the school that you are getting, for that you are paying more. Means the same thing will be available, that you have to pay more. मतलब आप पे तो कर रहे हो लेकिन चीज उसमें नहीं मिल रही है। Remember, over here the hyperinflation is associated with the situation of unemployment, unprecedented unemployment. You can imagine the situation was so worse that the people who are putting placards in their neck and writing over there ready to do any work, यानी अपने गले में तख्तियां बांध करके घूमते थे कि कोई भी काम करने को हम तैयार हैं। Means they are ready to sell themselves for the sake of their family members, कि कुछ पैसा आए तो अपनी फैमिली मेंबर को बचा सके। You can imagine the situation of hyperinflation. To purchase a packet of bread, they have to pay a huge sum of money, and that could be kept inside the 2 big bags. एक पैकेट इतना आपको पैसा देना पड़ता। That was the situation, unprecedented. So, in this situation, crippled Germany financially. First World War, उसके द्वारा उत्पन्न की हुई स्थितियां इतनी वर्ष हो गई कि वाइमर रिपब्लिक थी उसको डील नहीं कर पा रही थी। सिचुएशन क्या थी? तो क्रिप्टड जर्मनी फाइनेंशियली जर्मनी आर्थिक रूप से पक्कू हो गया। वॉर डैमेज, युद्ध की जो क्षति थी, एंड वॉर कंपनसेशन, और साथ में क्या देना था आपको? अलाइज पावर को युद्ध के लिए हर जाना, क्योंकि आपको वॉर गिल्ट, आपने युद्ध किया है, आपके कारण युद्ध हुआ है, तो आपको उसका पेनल्टी देना पड़ेगा अलाइज पावर को। एट द सेम टाइम क्या किया गया था? When you are telling कि आपको पैसा देना है, लेकिन साथ साथ आपने क्या किया? आपके जो जर्मनी के जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स वाले एरिया थे, माइंस थे, आयरन और माइंस, उसको आपने कब्जे कर लिया। जर्मनी was, as I have told you, very much rich in terms of gold and coal and iron mines. वो भी छीन लिया आपने। तो कैसे पैसा देगा? तो ये वाइमर रिपब्लिक की सबसे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। एक वॉर गिल्ट, ह्यूमिलिएशन युक्त तृतीय वर्षा जिसके लिए ब्लेम किया जाता। सच पूछा जाए तो वाइमर रिपब्लिक वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। एक्चुअली फोर्सफुली तृतीय वर्षा को साइन करवाया गया इससे, फोर्सफुली। उस पे चर्चा आप लोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वाइमर रिपब्लिक अकेले दोषी नहीं थी। वास्तव में वाइमर रिपब्लिक तो उस पाप को हो रही थी जो जर्मन एम्पायर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार करके किया, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल किया। आप होते हैं ये तो उस पाप को हो रही थी, उस पाप के लिए दब गई, नहीं निकल पाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशंस ऑफ जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से प्रेरित थी, वाइमर रिपब्लिक जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन थी, हैविंग सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, उसकी अपनी भी कई खामियां थी जिसने कभी भी इस सरकार को सफल होने नहीं दिया। नंबर 1, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण कभी भी कोई भी सरकार फुल मेजॉरिटी की नहीं बनी। मतलब हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनी, कोaliशन गवर्नमेंट। हमेशा यहां पे a number of parties ज्वाइन करते हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है। परिणाम क्या हुआ कि ये कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाई, कभी भी नहीं। To tackle such harsh condition, this difficult situation, there was a need of a strong government. But in this kind of situation, due to the proportional representation stated in the Weimar Republic और Weimar Constitution के संविधान में जो proportional representation की बात की, जिसके कारण कभी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी, हमेशा coalition government बनी। coalition government बनी, जिसने क्या किया, गठबंधन की सरकार, ये कभी भी मजबूत सरकार नहीं बन पाई।
परिणाम बार बार सरकारें आती थी जाती थी। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे ये पॉलिटिकल अनस्टेबल हो गई कि 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बन गए। वाइमर रिपब्लिक ने कितने सालों तक काम किया? तो 14 साल तक। और कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल, यानी लगभग 20 डिफरेंट गवर्नमेंट्स काम की और प्रत्येक गवर्नमेंट अगर एवरेज निकाला जाए तो 239 डेज, यानी कि एवरेज में कोई भी सरकार एक साल से अधिक काम नहीं कर पाती। You can imagine in such kind of situation, if there is a such kind of unstable political situation, what will happen? There is a complete failure of the Weimar Republic. ये गवर्नमेंट फेल करेगी ही करेगी क्योंकि एक सरकार भी मजबूत नहीं। इसके अतिरिक्त एक और चीज थी जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी, वो थी आर्टिकल 48 ऑफ द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी थी? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की थी। इस आर्टिकल 48 ने क्या कर रखा था कि यहां पे प्रेसिडेंट को इम्पावर कर दिया था। प्रेसिडेंट के पास पावर थी टू डिसमिस दी गवर्नमेंट, यानी whenever president feels कि ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, डिसमिस करो। इसी का परिणाम था 20 डिफरेंट कैबिनेट्स है, 209 डेज एवरेज वर्क कर रही थी। इसी कारण से there was no restriction on the power of the president. President can dismiss the government unanimously, अपने तरीके से, अपनी समझ के अनुसार कभी भी कर सकते थे। These are the problems जिसके कारण वाइमर रिपब्लिक बिकम फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है भंगुर, यानी तुरंत बिखर जाने वाला। ऐसी सरकार डेफिनेटली वाइमर रिपब्लिक की फेलियर हो गई। तो बच्चों यहां ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने कहा कि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट द डिफेक्ट्स और व्हाट आर द डिफिकल्टीज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द वाइमर रिपब्लिक ड्यू टू व्हिच इट फेल्ड। तो आप इसमें ये सभी पॉइंट को लिखेंगे, यानी इस पॉइंट को भी 1 2 3 पॉइंट और यहां से ये 2 पॉइंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और 48 का जिक्र करेंगे। लेकिन यदि सवाल स्पेसिफिकली पूछा जाए व्हाट were the inherent defects of the Weimar Republic due to which it failed, केवल inherent defect की बात पूछे तो आप केवल इन 2 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब केवल सवाल हो उसकी डिफिकल्टीज तो सभी चीजें शामिल होंगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि केवल आप बताइए inherent defects तो आप इन 2 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। यहां से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है और अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग दिस ट्रीटी ऑफ वर्साइल स्पेसिफिकली, एंड देन आफ्टर वी जस्ट मूव इनटू आवर कोर ऑफ द टॉपिक दैट इज राइज ऑफ हिटलर। ये बैकग्राउंड हम लोग पढ़ रहे हैं हिटलर के राइज होने की, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की अपमान किया, वाइमर रिपब्लिक की फेलियर, इन दोनों ने मिलकर के जर्मनी के लोगों के दिलो दिमाग में एक नई सोच डाली। वो सोच क्या थी? एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जर्मनी के अपमान का बदला ले सके, जो जर्मनी को पुनः इज्जत दिला सके, जो जर्मनी की कठिनाइयों को दूर कर सके, जर्मनी को पुनः एक संपन्न देश में बदल सके, जर्मनी को पुनः एक ताकतवर देश में बदल सके। ये वो परिस्थितियां थी जिसने हिटलर को आगे बढ़ने में और हिटलर को पावर में आने में मदद की, और यहीं से नाजी आइडियोलॉजी का भी जन्म होता है। जैसा मैंने कहा था कि कोई भी विचारधारा, कोई भी व्यवस्था यूं ही नहीं पनपती है, उसके पीछे एक पर्याप्त कारण होते हैं। यहाँ हम उसी कारण की तलाश कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल एंड हाउ इट हेल्प्ड, it created the situation through which Hitler rise to power. Please note down these things because these are the descriptions very much important as a point of view for writing the answers of these questions. तो ये आपके नोट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आंसर जब आप बनाएंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। Please note down these descriptions.